अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने, 844-844-0632। Namaskar. Very warm welcome to all the viewers, students, teacher educator in this very special session of CIT NCERT named Paricharcha. I am Renu Bhatt with you all, and you are watching us live on eVidya channels on channel number 6 and 11, and apart from these channels you are with us on our YouTube channel as well, that is ncertofficial official. मैं रेणु भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूं और अपने सभी देखने वालों को हम बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहेंगे परिचर्चा सेशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सहयोग एंड परिचर्चा सेशंस आर हेल्ड अंडर मनोदर्पण इनिशिएटिव, एंड इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, so that we can provide psychosocial support to all these students, their parents, teachers across the country, and we talk about their mental well-being as well in these sessions. तो किस तरह से हम उन तक पहुंचा सकते हैं, सारी बातें जो उनको जानना ज़रूरी है इन सेशन में आपको पता चलता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इन केस अगर आप मनोदर्पण काउंसलर से बात करना चाहते हैं, कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 844-844-0632 इस नंबर पर। आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज के करंट सिनारियो की बात करें तो हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिंग सुसाइड थ्रू अवेयरनेस, सपोर्ट एंड एक्शन। और हम सभी को पता है कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ये किसी भी समस्या का सोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या रीज़न है जो हम देख रहे हैं कि इस साल हम अपने आसपास देखें काफ़ी स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट कर जाते हैं, और इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स की किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं हमारे जुड़ चुके हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। और हम सबसे पहले मुलाकात करेंगे डॉक्टर सुष्मिता चक्रवर्ती आपसे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी को स्वागत है इस प्रोग्राम के लिए जी। और हमारे साथ हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर के.एस. मीना, यू आर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एजुकेशन, निमहांस, बेंगलुरु। वेरी वार्म वेलकम मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर चेतना दुग्गल, यू आर एसोसिएट प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन, सेंटर फॉर ह्यूमन इकोलॉजी, TISS, मुंबई। वेरी वार्म वेलकम मैम। नमस्ते जी। हमारे साथ हैं मिस्टर PC तिवारी, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं KVS रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, सभी को नमस्कार जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर चारू शर्मा, यू आर प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट एस्टेट, न्यू दिल्ली से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और आप सभी हमारे व्यूवर्स, हमारे एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट से मिल चुके हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन, क्योंकि ये डिस्कशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, या फिर आप कोई बात जानना चाहते हैं, या किसी रीज़न को आप समझना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं। मनोदर्पण के लिए हमने एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारे पास, आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो। मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है। वो है www.manodarpan.education.gov.in। हमारा फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं फॉर लाइव स्ट्रीमिंग NCERT, ये हमारा फेसबुक पेज है। आप जाएं और वहाँ पर ज़रूर आप अपनी अटेंडेंस और प्रेजेंस बताएं। और आप अगर कोई भी क्वेरी के साथ हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800040559। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, दैट इज़ NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का। आप जा सकते हैं लाइव चैट बॉक्स में और वहाँ पर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज़ के साथ, बातों के साथ, या कोई भी आपको डाउट हो, अपनी डाउट के साथ आप हमसे जुड़े, हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने। तो मैम, जब तक हमारे
हमारे बच्चे व्यूवर्स हमसे जुड़ते हैं। सुष्मिता मैम, हम आपके पास आएंगे। जैसे हमने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिंग सुसाइड थ्रू अवेयरनेस, सपोर्ट एंड एक्शन। हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी, हम अगर आज इस साल के सिनेरियो ले तो बहुत बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है और डेफिनेटली वो किसी न किसी मेंटल ट्रॉमा में ज़रूर होंगे मैम। तो इस सिचुएशन में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुसाइड आखिर बच्चे करते क्यों है, क्या है सुसाइड, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक सोल्यूशन हो सकता है उनकी सभी प्रॉब्लम्स का। Okay. Thank you, Renu, for raising this very important question. My dear viewers, yes, I will not go into the data that is already speaking loud and clear about what is the statistics of the rate of suicide, not only across the entire globe, but also in our country. And there is, we all know there is a huge rise in the rate of efforts being made towards committing suicide, towards doing self-harm, an extreme form of self-harm. सुसाइड बिहेवियर को रोकने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इट, व्हाई इज़ इट दैट व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये हमें जानना और मानना पड़ेगा कि सुसाइड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इट्स वेरी रेयर कि कोई एक सिंगल सर्कमस्टेंस या सिचुएशन leads to someone taking this kind of an extreme behavioral step. That is the first point. The second, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो young population है, and it is on record also, the data is also saying that from 10 years to 24 years, this age group is the one which is the most vulnerable, and this is the age group which is as the student, whether it is in the school or it is in the college, higher education में। अब यहाँ पे जानना हमें ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के ज़िंदगी जब वो स्कूल में एंट्री करते हैं, to the time they complete their education and go into a particular profession, occupation में जाते हैं, इस बीच की जो ये लंबी दौरान है, इसके भीतर ये बहुत सारे ट्रांजिशंस के थ्रू जाते हैं। वेदर इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल एट द प्राइमरी स्टेज, जब शुरुआती शिक्षा शुरू होती है एक फॉर्मल एजुकेशन में, या इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। These are the different transitions. अब हर एक इस तरह के ट्रांजिशन में there are times when students go through stress. अब what is the intensity of that stress? How much that intensity is perceived by the student? That has an individual difference. Along with this stress which is caused due to these transitions, there are also certain other factors which contribute to their distress. For example, loss of when they move from one school to another or from one class to another, leaving behind the friends जिनके साथ उनकी bonding बन चुकी थी, leaving behind a teacher जो शायद अब अगले क्लास में नहीं साथ होगा, emotional bonding जिनके साथ बनी है। Also it can be that losing a very dear person by a parent or a sibling or a grandparent. These are different other personal social factors which give stress to the student. They may not be able to express it verbally, communicate it, but it definitely adds to their stress. There are, of course, we already know there are academic related stresses like performance. Unfortunately, our fabric of the society has given this kind of some faulty assumptions that the success of your academics is by your academic performance. अगर तुमने 97, 98, 99% लाए, then only you are academically successful, then only you are good. Also, the dilemma in the later stages of the school, the higher stages, there is also a lot of dilemma and anxiety about what career to choose from, which stream to take, confusion about which is good for me and which is not, what I am suitable for, will I be able to succeed in this kind of a profession. And of course there is a lot of parental pressure, not only towards academic performance but also towards selecting the right kind of a stream,
the occupation in which one can go ahead, the career one can choose for. There is a lot of societal pressure also. There is pressure from the community, from the neighborhood, from extended family. So all these, along with those stresses being experienced because of the different transitions, these stressors also add to that, and we have to accept as the stakeholders in this school ecosystem, the studenthood ecosystem, is that no matter what, every student sometime or the other do experience stress related to these. But it is also important to understand and accept that every individual, no matter what this level of stress is, they do make efforts to cope with it. Now, what that coping mechanism is like is what is important. Is the coping mechanism a healthy way, or is it like, taking extreme stress, taking steps to divert away, to run away, to escape from the stress and deal it in a positive way? So coping तो हर स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं, बट वो किस तरह की कोपिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आती है बात हमारी, हम जो एडल्ट इस एक स्टूडेंट के चारों तरफ रहते हैं। अ स्टूडेंट इज़ नेवर वर्किंग इन अ वैक्यूम, राइट? स्टूडेंट के चारों तरफ कोई ना कोई होता है, उसका पीयर होता है, कोई सिबलिंग होता है, पेरेंट्स होते हैं या पेरेंटल फिगर्स होते हैं, टीचर होता है। स्कूल में बियॉन्ड द टीचर देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, द लैब असिस्टेंट, द लाइब्रेरियन, द गार्ड, द सपोर्ट स्टाफ, द क्लीनिंग पर्सन, स्कूल हेड, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, बहुत लोग होते हैं। तो अ स्टूडेंट इज़ नेवर अलोन। येट why is it that a student feels that there is nobody for helping me, nobody is understanding me? Because the fundamental base of anyone, any individual taking this kind of a step towards extreme form of self-harm, which is suicidal thought or ideation of suicide, is based on the three aspects, that is feeling of that I am not worthy, the feeling of worthlessness, the feeling that I am helpless, there is no one to help me, there is nobody who is understanding what I am going through, and the feeling of hopelessness, that nothing can happen. कोई कुछ भी कर दे, मैं कुछ भी कर लूँ, nothing will happen. Now if you mind, if you carefully इन तीनों शब्दों को हम देखें, feeling of worthlessness, feeling of helplessness and feeling of hopelessness, these are all associated with me in interaction with others. I myself, my interaction with myself and my interaction with others. So as I said in the very beginning, suicide is a very complex behavior and it is an interplay of different aspects. So we cannot pinpoint out and say that we cannot single out कि इसकी वजह से इस तरह का behavior एक होता है. Also there is this fact that when we are getting into the ideation or into the thought of taking this extreme form, I am deliberating on this, मैं इसके बारे में सोच विचार कर रहा हूँ, ये abruptly तो होता नहीं है. Every individual does give out some kind of a warning sign. Right. Whether it is communicated verbally, whether it is communicated non-verbally, it is communicated through their gestures, actions that they take, or some passerby communicating, some statement or something. They do give out different warning signs. And जब हमको रोकथाम के बारे में सोचना है, we are wanting to prevent this behavior to occur, then the very first thing that we have to understand is why this, what are these warning signs, what can one, how do we identify these warning signs, and then of course how to deal with, if I am seeing somebody displaying the warning sign, then what we can do. Probably that is the first step towards
when we start discussing about the prevention of this behavioral Right. phenomena. So if we can begin the discussion, Renu ma'am, then probably my first question will go to Dr. Meena. Ma'am, if you could kindly throw light on, how can we identify the warning signs, and why is it so very crucial that we understand these warning signs and the kind of the kind of immediate response or reaching out is required? Why is it so very important that when a person is showing these warning signs, is communicating these kind of warning signs, that we should reach out to that person? Over to you, Dr. Meena. Yeah, thank you very much. I think you have opened this session to a very vital topic, that is suicide, and you have actually spoken so true about the big public health crisis that this whole problem is. And we have seen that while decriminalizing suicide has been a welcome step in our country, as mental health professionals, I feel that we need to do more, and it is like various collective stakeholders should be involved in this to actually address this problem and see that every life is saved. And when you're talking about how can we identify the warning signs of suicide, I think people who are considering suicide may show signs that they are thinking about, or in what way to commit suicide, or even planning to attempt suicide. And these are generally called as warning signs in for us, and it can be scary for someone who as a family member or as a friend or as a colleague who is thinking that the person whom I'm very close to or whom I know is actually thinking to end his or her life. And it is very much important that we actually need to educate ourselves, or be more literate to identifying these warning signs. So as a public member, or as a community member, or as a teacher, or as a family member, or anybody, it is very vital that we are mentally literate in these things, and and actually help in reaching out to a person who is distressed. And when we look at the warning signs, there are many warning signs, like you already have explained, that some could be verbal and some could be non-verbal. And over the years, we have seen that people have been actually showing different ways of actually telling us that they are actually distressed. One is, some of them are actually very vocal in actually talking. They're quite stressful about the whole situation. They're very stressed because of some crisis, and they do tell that I feel like committing suicide, or life is really very miserable for me. I can't continue anymore, and I feel that it is better to end my life also. And such are the people who actually we need to be very vigilant about, and actually reach out when they talk like this. And there are some whom we might know after actually attempting a suicide also, they would have survived the suicide attempt, and this is when we actually need to reach out to them to see that, okay, like this has happened, a crisis has happened like this, and what could be the possible triggers, or what could have actually gone wrong that this person has actually attempted to commit suicide. And the most common thing, behavior that we see in people is, they completely withdraw. They could be a severe behavioral changes or mood changes that we see in children, or in adults, young adults. That a person who has been, quite jovial, who has been talking well, who has been communicating with you, suddenly you see that there are some oddities in behavior. They have been little withdrawn. He or she is not talking much, or he is not communicating much, maybe not answering your phone calls, or not maybe responding to you in a way he or she has been doing. So I think this is very important to see that what could have actually gone wrong, or why could this person be withdrawn, what could have suddenly triggered this kind of a response in the person. And what commonly we are seeing of late among the young generation is, like we see that they're most of the time on social media, or they're having access to phone. And I have seen at some of the time that, some of my, it could be colleagues at work, or it could be even some
students or somebody that, how they have sometimes updated their social status like WhatsApp or, in social media also, like some kind of a messages that they put up, in general, like, it could be something about losing hope kind of a messages, or that life is, not worth living. And at times I've actually reached out to one or two people and I've asked, okay, like, look, I've seen this message on your status, is something okay? And then I come to know that boy had actually had a breakup and he was going through a very tough time of coping, and he was telling that, no, I was actually, contemplating suicide. And then we had to actually sit and talk to him. So I think this is some kind of a new kind of warning signs that the young adults give out, or actually we need to be vigilant about. And like some already which you're told is, the feeling of intense hopelessness and, worthlessness, or feel that, I'm trapped in this particular situation and I can't actually, there is no hope for me and there is no help for me. And that, and this is how my life is going to be. So this kind of a feeling that a person reports or of is actually needs to be looked into. And also sometimes that there could be some kind of a trauma that the person would have had, or the child or a young adult would have had, and because of which they could be like, like, I have done something guilty, I have done something which I should not have done, I have wronged, or I have been, I'm feeling really shameful of something that I have done, but I can't share it with any one of you. And such words or sentences like this could be that, there has been some crisis that has happened, and the particular student or a child is feeling that intense guilt or shame, and he or she feels that, he is a burden to others. And at times we have also seen, that, some youngsters actually have some kind of, indulge in self harm behaviors, whereas you might see that they have actually, cut their hand, or, taken a sharp object and, have some scratch marks on their hands or legs and all that. And this could be some kind of a thing that they want us to actually reach out and ask them to help, ask them for help, and, ask them that, what could be the problem, or, it could be that they are under so much severe stress that that is one way of, actually dealing with the pain that they are going. And when we have asked students like that, they feel that, there's so much in unbearable pain that this was the only way that I could think of, was, inducing pain for myself. And sometimes it also happens that, some of the family members or friends could also find that he or she who is contemplating suicide could be hoarding some kind of a thing, like they see a large stash of some medicines or some blunt objects or something that could be actually hidden somewhere. And when you're cleaning the house or when you're looking somewhere, you find these things, and that tells you that, that there's something wrong here, or, something that is screaming that, that this person is trying to contemplate suicide. And sometimes we have also seen that, sometimes children don't know how to actually tell things when they're actually too stressed. For example, if a child who is being bullied or ragged in school, and, he is really very distressed, or it's a very stressful situation to him, he might be wanting to actually not wanting to go to school or college. There could be some kind of a school refusal or college refusal for wanting to go. And why is your child suddenly wanting not to go to school or, college? And we have seen that, I think, in the past, when we have seen certain students in some colleges, who have had these responses, they have reached out to their parents, and then they have told them that I've been ragged, I've been bullied. And at times, maybe, we as parents might not know the enormity of the situation, or, the how distressful that particular child is facing through. And then we see maybe 2 days later or 3 days that the child has attempted suicide and he is no more. And you feel that you should have actually listened to the child, or, you should have actually brought back the child home. So sometimes like this, it is very important as to why is your child, not wanting to go to school, or, why is your child reporting of some pain or something, and then but the tests are very normal. Why is it that, he is complaining of constant health issues and all that? And we also see that, sometimes they are very unduly very sad, they are very anxious.
We do see some appetite and sleep disturbances in people also. And sometimes we also see that, sometimes, you as a person who is contemplating suicide, families and friends tell that they do talk in some ways actually which may hint in some way that, he or she is actually contemplating suicide. That, I think I should, like, now, not trouble my parents anymore. Or I think maybe, as somebody like an elderly person might think that, we have had people telling that, I think it is time to maybe write my will or something like that. So these could be some of the verbal communications that might be there. And when you're asking as to why is it crucial to provide immediate intervention to those displaying indicators, I always go with an example that, like, when somebody is having a burn wound or somebody is having some kind of a physical illness, I ask my students, like, what would you do? So, for example, if you're having a burn wound, you immediately, your immediate reaction is to put your hand, under a water, and why do you do that? Or do you apply Bernol or, some cream? The reason behind that is actually, you're just trying to see that the whole problem doesn't escalate into a bigger issue, if it is left alone. And the same, it is very crucial that, why don't we do the same, for a person who is actually reporting about a mental health issue. So we have so much empathy towards people when we see someone who is, having a physical issues or health conditions, because the disability or the suffering is seen in front of our eyes. But a person who is actually facing a mental health crisis, he might be putting up a brave front to all of us. He might not want to tell us that, he is actually undergoing some kind of a trauma. Or, if he or she tells, it could actually be, he could be stigmatized, he could be actually, shamed for actually talking, or he could be even labeled by his fellow colleagues or, students, that, so that fear of, actually openly talking about these things could be there and could be preventing them from actually seeking help. So it is very important that when we do see this signs in a person, it is very important that we intervene, be very non-judgmental to a person. And, by doing this, we are actually, preventing it from escalating into maybe a full-blown disorder like depression or, panic disorder or any other post-traumatic stress disorders or any particular disorder that we think. And also we think that, by intervening, secondly, we feel that we can actually reach out to the person and help him or her so that he or she gets the desired help. It also helps us in recognizing that this person needs help, and if provided, we can actually save a life, and we can see that what are the contributing factors that are making this person, contemplate suicide. And if we can provide the necessary intervention, we can actually modify or alter the environment that he or she is in. Thank you. Thank you so much, Dr. Meena, for highlighting in so many ways about why it is important that we identify not only the warning signs, but also that we reach out at the right time. There is nothing like, I'll see tomorrow, or let it happen another time or few more times, then only I will understand that it is really serious. So, if I can continue with this discussion and I move to Dr. Duggal, if you could kindly throw us throw the light upon what are the ways through which we can provide support to a person who is displaying the different kinds of warning signs. What exactly, as a stakeholder, as a peer, or even as a self, as others who are around, they can do to provide some kind of support to the respond to the warning sign. Over to you, Dr. Duggal. Thank you, Dr. Sushmita. I think I'll pick up from what Dr. Meena was saying, that every child is precious for us, and it's very important to reach out if we identify any of these warning signs. तो दो चार बातें हो सकती हैं कि कई बार क्या हो सकता है कि जो बच्चे के आसपास हैं, स्टेक होल्डर्स और स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, पेयर्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ तो अलग है।
और शायद डिस्ट्रेस हाई है। और कई बार ऐसे भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर मीना ने कहा था, कि बच्चे खुद अपने आप भी डिस्क्लोज कर सकते हैं कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे और जीने की इच्छा नहीं है। सो इन दीज मोमेंट्स it is very crucial that someone reaches out to the child. कई बार the person who the child speaks to, they might be in a position to reach out. कई बार that person might actually request a counselor और a trained professional, यदि वो स्कूल में है या कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो हम उनसे भी बोल सकते हैं कि वो बच्चे से बात करें, क्योंकि कई बार जो ट्रेन्ड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, शायद उनके पास तो थोड़ी भाषा होती है, थोड़ी सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि कई बार बच्चे उस मौके पे बहुत सेंसिटिव भी होते हैं कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है उनके साथ। और तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस वक्त जो भी बच्चे के पास ये बात करने जा रहे हैं, वो खुद भी तैयार है या नहीं ये बातें करने के लिए और पूछने के लिए, और कहाँ ये बात हम उनसे कर सकते हैं। सो ऑल्सो इंश्योरिंग दैट वी आर एबल टू टॉक टू द चाइल्ड इन अ सेफ प्लेस, जहाँ पर उनकी प्रिवेसी मेंटेन हो सके, जहाँ वो खुल के अपने मन की बात कर सके। और ऐसे कुछ पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब हम ये बात बच्चों से करें, ऐसे किसी बच्चे से जो क्राइसिस में हो या डिस्ट्रेस में हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ओपनली इसके बारे में बात करें। कई बार ये हमारे दिमाग में मिथ होता है कि हम यदि सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो बच्चों के मन में और आइडियाज आ जाएंगे या उनका रिस्क बढ़ जाएगा। पर सच ये है कि यदि हम ऑनेस्टली और ओपनली उनके बारे में बात करें तो उन्हें ये भी समझ आएगा कि जो अडल्ट मेरे सामने बैठे हैं या पीयर मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरी बात समझने की क्षमता रखते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्पीक ओपनली। यदि हमें वो जानकारी किसी से मिली है, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ट्रूथफुल अबाउट इट। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम कोई एक्यूजेटरी या इंटेरोगेटरी टोन का इस्तेमाल ना करें। हम सबसे पहले ये कम्युनिकेट करें कि उनकी सेफ्टी और उनका वेलबींग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनके हित में बात करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे ऐसे मौकों पे बहुत ओवरवेल्म भी हो सकते हैं, हाई डिस्ट्रेस में भी हो सकते हैं, तो उस वक्त खुद हमारे लिए काम रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम 2 मिनट लेके बच्चों को ग्राउंडिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्टेबलाइज कर सकते हैं बिफोर वी इवन ओपन अप द टॉपिक फॉर डिस्कशन। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है वो कॉन्फिडेंशियलिटी की कंसिडरेशन होती है। हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो हमारे साथ शेयर करेंगे जो हम तक सीमित रहेंगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं यदि वो हमें बताएंगे तो शायद हमें किसी ट्रस्टेड अडल्ट को या उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार बच्चे हमको बातें बता देते हैं और यदि हम उसके बाद उनको बताएं कि अब हम ये किसी और को बताने वाले हैं, तो उनका ट्रस्ट हम पर से उठ सकता है। तो बीइंग वेरी क्लियर विथ द यंग पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम तक ही सीमित रहेंगी, पर यदि उनके लाइफ को कोई रिस्क है तो शायद हमें किसी ट्रस्टेड अडल्ट को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये शुरू से ओपनली बताना। एक और चीज जो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि ये जो काम है बहुत एम्पैथी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि हम बच्चों से पूछते हैं उनकी परिस्थितियों के बारे में, जैसे आपने कहा डॉक्टर सुष्मिता कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है सुसाइड। ये जो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस महसूस करते हैं बच्चे, वो उनकी काफी सारी परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। और हमारे बच्चे कई बार काफी वल्नरेबल कम्युनिटी से आ सकते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, कुछ ऐसी घरेलू परिस्थितियों की वजह से भी उनकी मानसिक स्वास्थ्य पे असर हो सकता है। सो फॉर देम टू इवन शेयर एनी ऑफ दिस, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखें, नॉन ब्लेमिंग अप्रोच रखें, हम समझ पाएं और उनकी कंसर्न्स को वैलिडेट कर पाएं। कई बार क्या होता है कि यदि हमारे सामने बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो हम खुद एंशियस हो जाते हैं, और उस एंजाइटी में कई बार हम बच्चों को कह देते हैं कि नहीं, तुम अच्छे के बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो, या तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा। तो ये सारी कुछ स्टेटमेंट्स ज़्यादा हेल्पफुल उस मौके पे नहीं होती। तो थोड़ा माइंडफुल रहना कि हम अपने आप को काम रखें और उस बच्चे की परिस्थितियों को हम समझ पाए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच नहीं लेके थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करें कि उनकी जो तकलीफ है, वो पेन है, सुसाइड इज अदर और एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस। तो एक्चुअली वो पेन क्या है, डिस्ट्रेस क्या है, उसको समझें और उनकी स्ट्रेंथ्स को भी हाईलाइट करें। इस मौके पे जो वो हमसे बात कर रहे हैं, यदि उन्होंने किसी से बातचीत की है या हेल्प ली है, तो हम उस स्ट्रेंथ को भी एक्नॉलेज करें कि दे हैव रीच्ड आउट।
और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हम अज्यूम नहीं करें कि उन्हें क्या चाहिए. सो इंश्योरिंग इवन इन दैट मोमेंट कि वो एम्पावर्ड महसूस करें. हम उनसे पूछें कि उन्हें किस तरह का सपोर्ट चाहिए, स्कूल से, टीचर्स से, पेरेंट्स से. और यदि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स या काउंसलर्स ट्रेन हैं तो वो खुद रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या सिवेरिटी है सुसाइड की, और उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उस वक्त बच्चे को हम अनसुपरवाइज्ड न रखें यदि हमें लगे कि रिस्क हाई है, और ऐसे ट्रस्टेड अडल्ट को आइडेंटिफाई करें या उनके सिस्टम में से ऐसे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करें जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, जो उनके साथ बैठकर उनकी एक सेफ्टी प्लान तैयार कर पाए. और यदि रेफरल की जरूरत है किसी काउंसलर से, साइकियाट्रिस्ट से, तो वो रेफरल भी हम फैसिलिटेट कर पाए. मैं एक लास्ट बात करके यहाँ रैप अप करना चाहूंगी कि हमें लगता है कि ये पहली कॉन्वर्सेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन ये एक टाइम की कॉन्वर्सेशन नहीं है. इट्स एन ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन, और इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट. कि यदि वो बच्चे आगे स्कूल आ रहे हैं या उनके आगे कोई जैसी दिक्कतें हैं, तो हम उनको कैसे ऑन गोइंग तरीके से बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट करके सपोर्ट कर पाए. Thank you. Thank you, Dr. Duggal. You have very rightly pointed out, as a stakeholder who is observing or who is being able to note the warning sign, उस वक्त क्या support करे, because even as an adult I may go flabbergasted कि अब क्या करूँ, and in that situation sometimes we become a little judgmental, या ये बोल देते अरे ये तुम क्या कर रहे हो, so these kind of, even a small comment like this can add further to the pain of that person, to that that individual जो already इस तरह का एक action लेने की कोशिश कर रहा है to deal with that pain. So let's not add to that. But if I can take forward the discussion to a different angle now, and that we have been, whenever we talk about the suicide as a behavioral phenomena, we have been noting the risk factors, the factors which actually push a person towards taking this kind of a step. But then when it is about prevention and protective and promotive factors, we need to know that there are, and we have to accept that there are many protective factors also which go side by side, and when these protective factors are nurtured, when these protective factors are facilitated, every child will feel that there is somebody whom they can turn to. They feel worthy, they feel valued. So with the assumption that both our panelists so far have agreed, and I am sure the other panelists will also agree, that every child, every life is valuable, and every child matters, because not only they are a resource to themselves, their family, but they are also a resource for their peer group, for their school, for the society at large. And when a life is getting disturbed, not only that person, that individual, that student is losing that support, that within the support factor, but also the people surrounding that person goes through lot of trauma. It's very difficult for everybody in that ecosystem. So we all have to understand these protective factors which actually work as a buffer, because distress, different kinds of stresses will happen in our life, but how we are going to deal with that stress, these we will be able to take up when we know the protective factors. So I would take forward the discussion now and go back again to Dr. Meena and request you to, ma'am, kindly tell us as to how can these protective factors can be built in the different spaces that a student functions, like in the school, at home, with peers, with the community, and what are these protective factors that work in these different spaces where a student is living. Over to you, Dr. Meena. Yeah, thank you, Dr. Shushmita, ma'am. I think protective factors are very important here when we look at it. It could be some kind of a skill set, it could be some kind of personality factors, it could be role of various stakeholders. They all actually come together to actually, strengthen these from a person from, contemplating suicide.
So when we look at it from the schools, what can schools do actually to enhance protective factors among our young generation? I think many of the schools are, like nowadays we are focused more on the academic front, and you very rightly told that, we should never make academic as a sole responsibility in student life. The moment a child steps into school, the parent has this notion that my school child has to be a topper, or, he should, get into IIT, or he should get into engineering or MBBS, or, this is the thing that, that is where actually, that is where the problems actually at times start also. That what is a child's where is a child's self-esteem or self-worth. And I think this is very important that we at school should actually nurture this as teachers, or this one, that we need to nurture the child's self-esteem, and make the child feel very important, that you are very important, and academics is a part and parcel of your life, but it is not the whole soul, this one of your life, that unless you excel in academics, you're a very bright student or something. It is not like that. So I think the personality of the child needs to be nurtured. It has to be preserved, and it has to be actually made to grow as a complete human being. And that is when actually there will be a strong meaning and value for life, the purpose for the life, that the child feels that apart from academics, there are so many other things that I can excel in, and I can be good at also. And we also, I personally feel that many of the schools, somewhere the mental health conversations are not happening at all. We feel that it is lacking in that. And it is very important that we encourage the child to actually, or the schools to actually have some kind of conversations around well-being. It need not be termed as suicide, or it could be because that again there is a myth or misconception, like Dr. Chetna told, that the moment we talk about suicide, it's assumed that you're putting that in the minds of the child. So it could be talked about coping, we could talk about stress management. It could be about well-being. It could be about holistic living. It could be under many umbrellas that we actually talk about mental well-being in the schools also. And and somewhere when we are talking about all these things, somewhere it actually works in the favor of a child, and and he's able to actually talk freely. We have, and make it very normalizing, that like how he tells that I have fever, or I have like my stomach is paining, or I'm having a headache. Make it very normal for a child to tell that I'm feeling sad today, I didn't feel like attending the school, I was actually distressed. Or it could not, it could also be like I was feeling crying. And if a child tells that I've been suicidal, it is not that we need to panic, but like how Dr. Chetna was telling, address it very in a non-judgmental way, and with lot of empathy also. And it is also very important that we build, the schools take up some responsibilities to build strong connections between the peers, and also with the teachers also. Like how like there are a lot of studies that have been done about the buddy system abroad. And there are a couple of studies, initial studies, that have been done in India, that how you can actually have the buddy system formation in the schools, that how one person can actually be few students can be trained in suicide or in mental health. And and they can actually identify someone who is feeling like this, and reach out and offer all the support and care that the person receives during this crisis. And form a buddy system, something that will actually like a cocoon, which will actually protect him until he is able to actually withstand and overcome the crisis also. And like, and many schools, we also foster good physical health. You're asked to actually join some sports, you're actually asked to swim, basketball, and all those things. We encourage a lot of and need to foster good physical health.
And it's also important that, it has to be a balance. We need to as well foster, the mental health about the child, and our focus should be a combination of, physical health and as well as mental health also. And also it should be very important that, as we have these conversations around mental health or well-being, or positive psychology, or many other things like this, or coping in schools, it is also good to also have some resources that, mental health resources and support that could be actually kept in the schools, that is access to counselors or access to mental health resources, very simple resources that the child is able to actually relate to, like, how can I cope with sadness, how can I cope with exam stress, something, or some problems that the child could actually relate to, and feel that, yes, I'm going through this, and maybe I need to talk to my teacher or talk to my counselor about it. And it's also very important, like how others have told, is, very good to actually, very effective to train our staff, teachers in some kind of a capacity building for suicide prevention, mental health first aid, and identify individuals at risk. There are a lot of these programs that are being done, and we can always, one can actually have access to any mental health professional who is near to the school, and ask them actually to do some kind of a training program for the teachers or for the staff, and for the students who are interested to actually act as these buddies in the school, who will actually help in identifying and supporting these people. And also it is, we talk so much about resilience, coping and all, so we need to see, what can we do actually, what life skills are needed to actually build the resilience in children. Do we need to have some kind of a in-depth life skills education, that, how are they able to actually think about the consequence, we call it as consequence analysis. For example, if there is some kind of a problem in front of you, how as a child or a student can I think that, okay, if I behave in a certain way, that could be the consequences, and if I can actually address this problem in this particular way, what could be the consequences? And he or she is able to actually judge, so we encourage this analysis among the students to any other problems, the problems that come, and how can they actually, think of it in a very critical way, and actually focus to minimize their stress, how they can, there are some various life skills that are there, and they can actually use, schools can actually adopt this. It is very superficially actually discussed, but could we have more in-depth discussion about these skills, which are very much needed in the very competitive field, unfortunately, that the students are in. And when we are talking about, Thank yeah. you, Dr. Meena. I think you have quite well highlighted that what are the protective factors, and what I could make out from your points that you raised is that the protective factors are at different spaces. Like, it is also the individual can have factors which work as a buffer for the student. There are also factors which that are functioning at the school level. There are factors which are functioning at the home, at the family level, and of course in the community. So there is a close interconnection that is going on, and at times all of these factors come together to give that buffer. At times it is the individual spaces, whether it is the school or the family, which promote or which highlight the protective factor. Dear viewers, we are understanding through this discussion that it is not just one person or one set of people who are functioning towards the prevention of the suicide as a behavior. Rather, we can see that there are many people, many places, and stakeholders who are involved in this. In this direction, I would like to now take forward the discussion and move towards Dr. Charu Sharma. Ma'am, if you could please highlight that why a collaborative approach, because as we were hearing from Dr. Duggal and Dr. Meena that the community has a role to play, the family, the parents, the siblings have a role to play, school of course has a role to play, when the individual is, there is a buddy system ki baat kar rahe the. So why is this kind of a collaborative approach is so very important when we are talking about suicide prevention? Over to you, Dr. Charu ma'am.
Thank you, Dr. Shashmita, and thank you very much, other panelists, for highlighting the factors which are actually responsible for this kind of problem and further suggesting various remedies. I was just listening to it and being among the children for almost 1/3 of my day, I agree to the fact that a child is surrounded by almost 360-degree horizon. The various problems, if we talk about, be it the academic or be it the family issues, parents separated, and many a times we have undiagnosed or untreated mental health conditions. The children is unaware about the fact, the parent is unaware about the fact, and society as a whole, they hardly feel like that this is a problem. Further, we have the substance abuse because of the company, the peer pressures, and many like this, which is very prominent in our school system. And we feel that the lack of support in many ways, and with the change in time, the cyberbullying is also playing a key role in pushing the child towards this kind of issue. But at the same time, I feel that each stakeholder brings a unique perspective and a unique expertise, as we have been sitting together on the table. And collaboration always allows for the sharing of resources, expertise, and perspective. And mental health now, the WHO definition since has changed from mental illness to mental well-being is a big positive change. And we all understand that the most pressing issue as of now is this only. As a school administrator, I have been meeting the parents, the students, and I feel like that we address everything in the society through our teachers. Through our teachers, we wish to reach out to students, to their families, and to the community as a large. And since the child spends most of the time in the Vidyalaya, certainly we owe the responsibility also that how to address it. So I feel that together, if we talk about the first initiative is about the building relationships. We all know that when we talk about a happy family, we talk about how is the relationship amongst the different family members. So as a school, it is again a big family. And if we further go to the community, it is another, a very big family. So the first thing as in the family we ask for is, I firmly believe that I take up the acronym AURA, where the A first goes for the acceptance. We all have been talking about that a child may not be perfect, may not be an ideal child in every possible way. So everybody, be it the parent, be it the teachers or the school or the peers, everybody should accept the child formal as it is. Then we need to understand, because if we talk about the disproportionate pressures which a child has in this age, and if we talk about our age experience, a child is actually very tight pressed. So we need to understand that for every problem, there is a reason. And we have had to address the problem not at the peripheral level. We have had to go to a large extent, and through the teachers, we have to reach out to the student family also, that what is actually the reason. So that kind of understanding matters a lot. Thirdly is about the respect. Every individual deserves the respect. A child may be good or bad in studies. It normally happens that we have a preference for the children who are in one or the other way excel. So we need to create that kind of atmosphere that every child need a respect. And certainly this helps in building up the relationship. And finally, if we talk about, that is the appreciation. So this is like we have all have been saying again and again that every child is precious. Every child has one or the other strength. So appreciation certainly helps out the child in every aspect of the field, emotional, academic, sensitivities, whatsoever we talk about. So the first and foremost important thing is about developing rapport with the child. Then I also believe that if I share my life incidences, the teachers also share their life incidences, that whatsoever you are going through is absolutely normal. We all have gone through this kind of phase in our life, and every problem has a solution. This also creates a comfort for the child. Okay, fine.
they have also gone through this. I am also going through this, and this too shall pass away. So we have had to normalize the situation in that way. Then we need to give the time to the child, to the parent, and to the community as a whole, that we should not expect the instantaneous compliance. Whatsoever instructions I am giving to the child, whatsoever policy I am adopting, I should not expect that I will see the result at once, and it needs a constant follow-up. It needs constant follow-up with the parent, with the counselor, and with anybody whosoever can help me out. So we normally don't be so patient to wait for a long time, and we expect that things will at once give the desired results. Then we can have that something non-negotiable rules, and the rules should be impersonal. Because as Dr. Meena was saying, or Dr. Chetna was saying, that if something we could sense out, if we have the signals where we feel that there is a threat to the life of a child, then certainly it comes under the non-negotiable rules. But there are certain other aids in the life of a child which can be adjusted to some fact. So we should not reject a child on that pretext. So as a leader or as a head of the family, we need to have a clear understanding that what can be accepted to some extent and what cannot be. Then I think as a child, we need to praise all the good efforts. Even if the result is unsuccessful, we need to praise the attempt. And if a child is at level 1, goes to the level 2, it should be highlighted in the public. That gives a recognition to the child. As we were talking about the worthlessness, hopelessness, so certainly it helps out in overcoming them. Because every child feels like, okay, fine, I have gone through some miles, I have a further way to go, so he or she is going to make the attempt for the same. Thank you, Dr. Charu ma'am. Yes. I'm sorry to cut you a little short because we are running out of time and we are at a very crucial juncture for the discussion. But what I can make out from what you are, putting your efforts to highlight is that there is need for a very strong partnership between the school, the home, the community, where the student, the individual is, moving around. So what the message is being, promoted in the school, when that same message gets carried to the home and it is followed even in the community's interactions with the individual, then only such kind of a fruitful collaboration between these three important agencies for a student's life, the prevention of suicide as a phenomena can be more strong, can be more impactful. Knowing that these three agencies have such an important role to play, can we then move towards a little more specific discussion in the next few minutes, because we have just about a half an hour left for our discussion and there are quite a few things. So if quickly we could go to Tiwari sir, and if you could, Tiwari ji, if you could highlight that what can be done to create the people who are at home of a student, how they can create a very supportive environment, because time and again our panelists are again and again saying that students need that kind of a supportive environment. So let's see how the home can be created a supportive environment. Over to you, Tiwari sir. जी, थैंक यू मैडम। जैसे कि डॉक्टर चेतना दुग्गल मैडम ने बोला था कि एम्पैथी, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक। हम सब लोग जो बच्चों के साथ सीधे डीलिंग में हैं, वी ट्राई टू बी एम्पैथेटिक, दो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू बी। 2 महीना पहले एक खबर छपी थी कि एक बच्चा दौड़ते हुए एक इंस्टीट्यूट से गया और 8वीं मंजिल से उसने छलांग लगा। जितने भी पेरेंट्स होंगे इसने सबको झकझोर कर रखा। जब मैंने सुना, मैं भी अपने निवास की जो 2 मंजिला है छत पर गया और 2 मंजिले से मैंने जब देख करके नीचे झांका तो मुझे डर लगने लगा। और अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस के 5वीं मंजिल की छत पर चढ़ करके मैंने देखा तो मुझे 5वीं मंजिल से नीचे देखने में डर लग रहा था। मेरे मन में एक विचार आया, दिखाई दे या ना दे, शामिल जरूर होता है हर खुदकुशी में, दरअसल कातिल भी जरूर होता है। खुदकुशी नहीं, हत्या होती है। अंतर इतना होता है कि व्यक्ति एक नहीं, शामिल समाज बड़ा होता है।
एमाइल दुर्खीम कई लोग एमाइल दरखाइम भी बोलते हैं। एमाइल दुर्खीम एक साइकोलॉजिस्ट हुए, फ्रांस के थे। 19वीं सदी में उन्होंने लगभग 26,000 से अधिक केसेस पर रिसर्च की, और रिसर्च के बाद उन्होंने एक बात बोली कि जो सुसाइडल टेंडेंसी है, इट इज नॉट द मैटर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इट इंक्लूड्स इन इट द होल सोशल साइकोलॉजी। तो जैसे कि चर्चा चल रही थी कि एक व्यक्ति है, बच्चा है, वो एक सिस्टम के रूप में है, उसका पूरा सराउंडिंग भी उसके साथ है। जो सराउंडिंग है वो उसकी परिस्थितियां हैं, उसका समाज है, उसका घर है। तो हमारी जो चर्चा आगे होगी वो दो चीजों पर होगी। एक कि उस बच्चे का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कैसे स्ट्रांग हो, और जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका होम स्कूल ये एनवायरनमेंट है, ये कैसे अधिक कंड्यूसिव हो और मोर सपोर्टिव हो। जैसा कि सम्मानित मैडम ने शुरुआत में ही कहा था कि हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस, मैं इन तीनों के साथ दो चीज और जोड़ना चाहता हूं। जब पर्पजलेसनेस भी महसूस हो, जब इंटरेस्टलेसनेस भी महसूस हो, और जब विड्रॉल सिंड्रोम भी दिखने लगे, और एक हफ्ते से अधिक तक 2 या 2 से अधिक ये लक्षण दिखने लगे हैं, तो निश्चित समस्या गंभीर हो रही है। इंटरेस्टलेसनेस, किसी बच्चे का इंटरेस्ट था नई नई मूवी देखने में, कोई सॉलिड रीजन नहीं है, बावजूद उसके भी वो मूवी देखना नहीं चाहता है। वर्थलेसनेस, पर्पजलेसनेस, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। विड्रॉल सिंड्रोम की जब बात आती है कि दोस्तों मित्रों अपने घर परिवार में कहीं जाना चाहता था, नहीं जा रहा है, कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है, तो हमको सचेत हो जाना है। और साथ में केवल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी नहीं है, जैसे कि साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट्स की बात कही जाती है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जो कि हमारे हार्मोनल लेवल को कंट्रोल करती हैं, जिसमें सेरोटोनिन हार्मोन सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसका लेवल डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए इसको भी कंट्रोल किए जाने की बात होनी। अब जैसे कि मैडम ने कहा कि हम अपने घर के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर क्या सपोर्टिव और उसके बाद क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं। जैसा कि एमाइल दुर्खीम जी की मैंने बात कही थी, उन्होंने तीन तरह के सुसाइड्स की बात कही थी, जिसमें इगोइस्टिक, और दूसरा था अल्ट्रुइस्टिक, और तीसरा था एनोमिक। तो एनोमिक और इगोइस्टिक जो सुसाइड्स हैं, उनको अगर हम डिस्ट्रेस्ड बेस्ड सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर रखते हैं तो ये बात उसके लिए हमारी है। और हमारे बच्चे जो डिस्ट्रेस बेस्ड सुसाइडल टेंडेंसी की ओर बढ़ते हैं या बहुधा बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमको बहुधा, तो उसमें सबसे अधिक जो रोल है वो है सोशल प्रेशर का, और सोशल प्रेशर जनरेट हो रहा है पेरेंटल प्रेशर से। जब हम अपने बच्चों से कहते हैं कि तुझको तो फर्स्ट ही आना है, 40 बच्चों की एक क्लास है, और हर पेरेंट्स अगर ये प्रेशर दे कि तुमको तो फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट तो एक ही आएगा, तो निश्चित ही 39 जो हैं वो डिस्ट्रेस्ड होंगे। दूसरी बात, जब किसी जैसा कि सम्मानित वक्ताओं ने कहा था कि IIT JEE का एग्जाम है, नीट का ही एग्जाम है, जब इन बच्चों के लिए हम कहते हैं कि तुमको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तभी कुछ है जीवन में, तभी कुछ कर सकते हैं। यदि हम अपने बच्चों को फर्स्ट आने का प्रेशर दे रहे हैं, यदि हम अपने बच्चों को किसी विशेष एग्जाम को क्वालिफाई करके ही जीवन में सफल होने की बात कर रहे हैं, तो हम उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं अपने श्रोताओं से भी और अपने बच्चों से भी बहुधा ये कहता रहता हूं, अपने गांव, गली, शहर, मोहल्ले में धनिकों की, सेठों की एक लिस्ट बनाना, और देखना सफल लोगों की एक लिस्ट बनाना, और देखना उसमें कितने IITian हैं और कितने डॉक्टर्स हैं। तो बच्चों को एक अननेसेसरी कंपटीशन की ओर धकेलना भी न तो जरूरी है न ही उचित है। हम समझते हैं कि ये थोड़ा बहुत कंपटीशन क्लैरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, लेकिन यदि एक सीमा से अधिक कंपटीशन होने लगता है तो वह कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस की ओर फिर बढ़ने लगता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने बच्चों को प्रेशर में आने से बचाएं। और दूसरी बात क्या है कि जब कोई हमें, जैसे कि पिछले ये 6 लक्षण हमने देखे, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, इंटरेस्टलेसनेस, पर्पजलेसनेस और विड्रॉल सिंड्रोम, कहीं पर हमको स्वयं में महसूस हो रहा है या हमको अपने बच्चों में महसूस हो रहा है। बहुधा हमारे समाज में यह भी कह दिया जाता है कि क्या डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन क्या होता है, हमारे समय में तो नहीं होता है। यदि बीइंग एन एडल्ट
हम ऐसा कह रहे हैं तो हम उसको सुसाइडल टेंडेंसी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उसको सुसाइड की ओर अग्रसर कर रहे हैं। समय परिवर्तित हो गया है। यह वह समय नहीं है जब बच्चे चाचा के, ताऊ के, मामा के, अड़ोस पड़ोस के सब साथ में खेलते थे, गांव में पंचायतें होती थी, महिला मंडली होती थी, अपने मन की बातों को कहते थे, एक दूसरे की सुनते थे। ये वह समय नहीं है। बच्चे पिट के भी आते थे, पीट के भी आते थे। ये वह समय नहीं रहा। तो इसलिए यदि कहीं पर हमें कोई डिप्रेशन का लक्षण दिख रहा है तो हमको सजग हो जाना है और एडल्ट होने के नाते, बड़े होने के नाते, टीचर्स और इस प्रोफेशन में होने के नाते उनको हमको निवारण की ओर ले जाना। अब जब बात आती है यहाँ पर कि हम क्या करें, इसमें जब मैं देखता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे तो उधर जर्मनी के, लेकिन बाद में अमेरिका में वो जाकर के सेटल हो गए, एरिक फॉर्म, उनकी किताब आती है आर्ट ऑफ लविंग, जैसा कि सम्मानित पूर्व के वक्ता लोग भी बात कर रहे थे। आर्ट ऑफ लविंग में उन्होंने 2 तरह के रिलेशंस की बात की, एक कंडीशनल, एक अनकंडीशनल। हम अपने बच्चों के लिए और हमारे बच्चे भी कोई ना कोई एक संबंध, एक ऐसा रिलेशन हो, चाहे घर में हो, घर के आसपास हो, बाहर हो, जहां अनकंडीशनल रिलेशन हो, जहां वो अपने मन की बात सब कुछ गुबार निकाल सकें, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में कैथारसिस कहते हैं। वो जब अपने मन के अंदर के जो भरा हुआ है उसको निकाल पाएगा तो थोड़ा सा मन को उसका हल्का हो पाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि बच्चों को हमको यह आदत डेवलप करनी है कि वो एक्सप्रेसिव हो। नैन्सी कोडेरो का एक बहुत बड़ा इसमें लेख भी है और उनकी रिसर्च भी है कि जो अधिक एक्सप्रेसिव होते हैं वो अधिक सहज होते हैं, और जो अधिक सहज होते हैं उनमें इस तरह की डिस्ट्रेस होने की, डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसी कम होती। तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद तिवारी सर। आपने बहुत अच्छे से, बहुत मैंने क्लियरली और क्रिस्पली बताया कि एक घर की वातावरण में किस तरह से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ब्रीफ पॉइंट में बता दूं तो जो तिवारी सर ने बताया दर्शकों, ये कि हम घर में कृपया अपने बच्चों को कंपैरिजन ना करें, एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, उनको मजबूर ना करें कि वो अपनी क्षमताओं के ऊपर जाके कुछ ऐसी टारगेट रखें जो उनके लिए असाध्यपूर्ण हो, जो वो अचीव ना कर पाए। अनकंडीशनल लव करें, कि एक्सेप्ट करें उनको द वे दे आर, ये मान के चले कि हर बच्चा होशियार है अपने ही कौशलों में, वो यूनिक है। और एक और बड़ी बात तिवारी सर ने बताया कि एक्सप्रेशन, एक वातावरण ऐसा घर में होना चाहिए जहाँ पे एक बच्चे को कभी भी 2 राह में नहीं होना पड़ेगा कि क्या मैं बोलूँ या ना बोलूँ। ये मेरे मन में आज फीलिंग हो रही है, क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकती। अगर मैं बोला तो क्या मुझे डराया जाएगा, मुझे धमकाया जाएगा, मेरी बातों को खिल्ली करके उड़ाया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, या मेरी बात को मान्यता मिलेगी, एक्सेप्ट करेंगे और सुनेंगे। तो इस तरह का, इसी को कहते हैं शायद एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट घर के अंदर। थैंक यू तिवारी सर फॉर putting it in such a crisp and beautiful way. Now I'd like to now go back to Dr. Duggal. मैडम, अगर आप जैसे तिवारी सर ने घर के वातावरण के बारे में कहा कि किस प्रकार से वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप अगर क्विकली थोड़ा सा बता सके कि इन द स्कूल सिस्टम में, स्कूल के अंदर किस तरह से इस तरह का क्विक points on which the school can focus to give this kind of a supportive environment to the children. Over to you, Dr. Duggal. Thank you, Dr. Sushmita. I'll try to capture the points in brief क्योंकि कुछ चीजों की चर्चा हो चुकी है. But just to sort of put this into a focus, I would say that एक whole school approach की जरूरत है, जहाँ पर हम हर लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और इंटरवेंटिव लेवल पे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और जहाँ सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं. ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, एक होल स्कूल अप्रोच जिसे हम कहते हैं. So if I was to break it up at a promotive level, I think Dr. Meena was mentioning that जहाँ बच्चों की mental health और well-being प्रमोट हो, resilience build हो, social emotional competencies जैसे हम life skills curriculum कहते हैं वो integrate हो, ताकि उनकी strengths और capacities को हम bolster कर सके. Supportive relationships जैसे कि peer support और teacher mentors से वो connected हो, ताकि बच्चों को एक sense of connection और belongingness हो पाए. जो हम फोकस करना चाहते हैं कि एक ऐसा
स्कूल क्लाइमेट हो जो सेफ हो, जहाँ पर हर बच्चे की रिस्पेक्ट हो, where each child feels that they can express themselves. तो एक स्पेसेस क्रिएट हो जहाँ पर ओपन डायलॉग हो सके, बच्चे अपनी मन की बात रख सके, जहाँ पर कोई उन्हें जज ना करे. So thinking a little bit more deeply about this in terms of inclusion, वो इंक्लूजन हो जेंडर के बेसिस पे, एज, कास्ट, रूरल, अर्बन, तो स्कूल्स cater to children from diverse communities. तो थोड़ा यदि हम ये भी सोचे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं हमारे स्कूल में जिनकी आवाज या जिनकी वॉइसेस मार्जिनलाइज हो जाती हैं, क्योंकि हर बच्चा सेम जगह से नहीं आता. तो हाउ डू वी एंश्योर इंक्लूजन इन आवर स्कूल्स? The other thing that I want to highlight is what are called restorative school discipline practices. तो कई बार हमारी डिसिप्लिनिंग प्रैक्टिसेस बहुत प्यूनिटिव हो जाती हैं और उसकी वजह से भी बच्चे एक्सक्लूडेड हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और बच्चे आइसोलेटेड भी फील कर सकते हैं. तो रेस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस जहाँ पर बच्चे एम्पावर्ड फील करें, उन्हें नॉर्म्स के बारे में पता हो, वो पार्टिसिपेट करें उन नॉर्म्स को को-क्रिएट करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी लें. दूसरा जो प्रिवेंटिव लेवल पे है, एक अवेयरनेस हो, डिस्ट्रेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बच्चों की जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में ओपन चर्चा हो पाए और टीचर्स भी ट्रेंड हो इश्यूज ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी के बारे में. और जो बच्चे एट रिस्क हैं किसी भी स्कूल में, वो ग्रीफ और लॉस की वजह से हो सकता है, कोई कम्युनिटी डिजास्टर से इम्पैक्टेड हो सकती है उसकी वजह से हो सकता है, कोई बच्चे डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी से आ सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो सकते हैं. तो ऐसे बच्चों के लिए जो वल्नरेबल हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हो. और फिर सपोर्टिव स्पेसेस जहाँ पर बच्चे यदि हेल्प सीक करना चाहें, दे आर एबल टू रीच आउट, वेदर दे आर फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पेसेस, ईदर थ्रू अ डायलॉग बॉक्स और थ्रू अ peer सपोर्टर और थ्रू अ काउंसलर या बाहर के किसी रेफरल से. तो सपोर्ट हर लेवल पर हमें बनाकर रखना है. एंड वो जो कल्चर और क्लाइमेट है, हर एक स्टेक होल्डर फ्रॉम द स्कूल लीडर to the teachers, to the staff, to the parents and the community, वो सबका एक collaborative effort है. Thank you, Dr. Meena. Dr. Duggal, that you have rightly pointed out, it is every person in the school. If you take it as a whole school approach, then only the school in totality will be able to give that kind of a preventive and supportive environment to each and every student. Now the other and the third agency is the community. Agar Dr. Meena, quickly within a couple of minutes, if you can say that how the community can be empowered to give that kind of a support system. ये तो रही बात हमारे घर की और स्कूल की, but the community at large, where both the school and the family and the home is a part. How do we empower the community towards prevention of suicide? Agar quickly within 2-3 minutes, if you can please throw light on it. Yeah, thank you, Dr. Sushmita. We rightly tell that suicide is a public health crisis. So role of every community member becomes very important in this. And quickly, I would like to share that recently we had conversations about suicide prevention in a public library in Bangalore in Indranagar area. So and communities have so much of spaces within the particular areas. Or public libraries, and also it's very important that we start having conversations about this in any public spaces or any opportunity that we as community members can get, networking with a mental health professional in the local mental health professional, and start this conversation about mental health, suicide prevention in a place. It could be maybe in schools, it could be in libraries, it could be in marriage halls, or it could be anywhere. Start that conversation, be the first one to actually start this conversation about mental health. And like how we as a community come together for maybe Ganesha festival, Durga Puja, or so many other festivals, across religions, why don't we have such kind of, programs in the communities for mental health and suicide prevention? And, we have been doing such kind of unique campaigns back in our institute where we had, 35 to 50 organizations which came together, who were, working in the area of suicide prevention. And it was like a model thing for communities to actually follow. And and already like how I'm Dr. Chetna, Dr. Charu ma'am, everyone have told, capacity building of people are very important, what we call as gatekeeper training, जो हम बोलते हैं community members के लिए,
वो बहुत ज्यादा important है that every one of us get trained कि हमने like it is not that I'll be trained only in providing CPR or in this thing, but how can I get trained myself in identifying mental health problems and reach out to a person who is having a mental health crisis. And it's and we also have community radios in our communities, how we can make use of the local media and also actually start these conversations. I think this is very important that we as community come collectively and address this and and be the first persons to actually respond to such a crisis. Dr. Sushmita. Thank you, Dr. Meena. Very quickly, you have said that yes, we do have many community resources. Spaces are there, structures are there in the community. Only that is required is to bring everybody and open up the conversation. Remove the myths and the misconceptions that are there at the community level and community members. The more we talk about it at the community level, the more we will empower our community members to stand up and be an active partner towards prevention of this suicide and not make it an individual effort only. So now that viewers, we have understood that each of these spaces where the students live and function, whether it is at the home, it is in the school or in the community where they survive, where they function, each of them have a big role to play in prevention of suicide. Let's see how all these partners together can work on three very important aspects. Number one being early intervention. So, if the early intervention is of course one area, the second is about destigmatization about mental health, that reaching out, Dr. Meena, Dr. Duggal, Dr. Sharma, Tiwari ji, everybody has been talking about again and again the same thing. If we can talk about having a headache, then why can't we talk about that I am not feeling well, that I am, I have apprehensions, hesitations in communicating, in expressing that I am not feeling good today. So, destigmatization of mental health, how all these stakeholders can do. And the third thing is how can we promote the behavior of seeking help. For the early intervention, I will request quickly Tiwari sir, if you could please throw a few light within few minutes as to how these agencies at home, the community and the school can work towards early intervention. जी मैम, अर्ली इंटरवेंशन का जहाँ तक प्रश्न है, जैसे आप बता ही रही थी कि बच्चों के अंदर ये भाव लेकर के आना है कि लोग क्या कहेंगे, इस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी। लोगों का काम कहना है, कहने दीजिए। अगर ये भी मैं ही सोचूंगा कि लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, तो ये तो उनका काम है, ये वो सोच। दूसरी चीज है, बच्चों के अंदर जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो एक पर नहीं बल्कि कईयों पर बनाने की उनके अंदर आदत हमें डालनी है। यदि कहीं पर किसी एक रिलेशन से उनका इमोशनल में थोड़ा सा कोई दिक्कत होती है, ताकि वो अपनी शेयरिंग दूसरे लोगों से कर सके, उनकी इमोशनल डिस्टर्बेंस, उनकी इमोशनल शेयरिंग है दूसरों के साथ भी हो सके। तीसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी, जैसा कि आजकल कम हो रही है, प्रतिदिन लगभग घंटे भर की फिजिकल एक्टिविटीज उनके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हार्मोनल सेक्रेशन प्रॉपर हो। और एक अंतिम चीज जो मैं कहना चाहूंगा, और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभूत तथ्य है और मेरे लिए सत्य है, बच्चों के अंदर, बच्चों के बड़ों को भी यदि हम आस्थावान होते हैं, यदि हम किसी सुप्रीम शक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, जिसको भी सोचते हैं उसके प्रति यदि हम आस्थावान होते हैं, तो हम थोड़ा सहज होते हैं, हमें थोड़ा भरोसा होता है। इस बारे में विलियम जेम्स ने भी कहा है कि मैं एक प्रैग्मेटिक फिलोसोफर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज से हमको फायदा होगा हमको वो काम करना चाहिए, और हमें विश्वास रखने में फायदा अधिक होता है, इसलिए हमें अपने अंदर थोड़ा विश्वास होने से क्या होता है, हमें थोड़ा भरोसा होता है, और हम जो स्ट्रेस आता है, डिस्ट्रेस आता है, उसको थोड़ा ट्रांसफर कर पाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, अनन्या चिंतयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि दोज हु हैव फेथ इन मी, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, दोज हु हैव फेथ इन मी आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। जब ये भाव मन में आता है तो बड़ा भरोसा, बड़ी मजबूती से मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को यह भी कह देना चाहता हूँ, यह चैप्टर 9 में कहा श्रीमद् भागवत गीता के, तो इससे पहले चैप्टर 2 में यह कहा जा चुका है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव राइट इन एक्शन, you do your action keeping your focus on the action without deviating, without transferring your focus from action to the fruit of actions.
और अंतिम बात मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने आस्था रखते हैं तो भगवान राम के चरित्र से हमको बहुत मजबूती मिलती है, बहुत भरोसा मिलता है। छोटे मोटे जब हताशा हमारे जीवन में आने लगती है ना, तो हमको लगता है कि जिसको कल सुबह पूरे बड़ा साम्राज्य मिलने वाला था, आज उसको बन जाने की आज्ञा हो गई। उसके बाद जो डिस्ट्रेस में नहीं आया, डिप्रेशन में नहीं आया, यही रामत्व है। हम अपने बच्चों के अंदर जब इन संस्कारों का, इन मूल्यों का बीजारोपण करेंगे, छोटे मोटे जब उनको सेटबैक्स जीवन में आएंगे, तो वह रामत्व की ओर अग्रसर होंगे और विषम परिस्थितियों का भी बहुत पुरजोर तरीके से सामना कर पाएंगे। उनका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत मजबूत हो जाएगा, ताकि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म से उसको कवर अप कर पाएंगे, पार कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। विषम परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ने का साहस रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद तिवारी सर। आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि अर्ली इंटरवेंशन की बात जब होती है तो बोथ एट द स्कूल, एट होम, इन द कम्युनिटी, बार बार शायद हम बच्चों को अपनी रेजिलियंस की क्वालिटी, डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रेसेस, ऊपर नीच रहेगी ज़िंदगी में। सक्सेस जैसे आता है, फेलियर्स भी आएगा, कई बार फेलियर्स एब्रप्टली आता है, लेकिन इसके साथ जूझना है और सकारात्मक तौर पे जूझना है और इसके आगे बढ़ना है। इस तरह की जब हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी फैसिलिटेशन, नर्चरिंग में इस तरह की क्वालिटीज़ को अपहोल्ड किया जाएगा, देन ओनली इट विल बी एबल टू गिव अ वेरी early intervention into promoting and protecting our children to develop these kind of qualities and therefore prevent towards the suicide as a behavior, committing of it. The second aspect is of destigmatization of mental health illness. अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ डॉक्टर चारू मैडम को कि क्विकली विद इन couple of minutes if you could say that what can be done. आपकी एक्सपीरियंस एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है, इस एक्सपीरियंस के सहारे आप अगर हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के प्रति जो एक स्टिग्मा है, एक टबू है, उसको कैसे डिस्टिग्मेटाइज करें घर पे, कम्युनिटी पे, स्कूल में। क्विकली मैम, विद इन 2 minutes. थैंक यू। Normally in the school system, I believe that we always join the dots when the incident happens. हम कहते हैं कि हाँ ऐसा लगता था, ऐसा बच्चा बोलता नहीं था, उसके अंदर शाइनेस थी। We always join the dots and then we feel like we addressed it at the earlier stage, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और इसका यही तरीका हो सकता है कि हम बच्चों से बहुत ही इंक्लूसिव लैंग्वेज में इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। उसके साथ किसी भी तरीके का ये स्टिग्मा ना हो। इवन हम स्कूल सिस्टम बोले या सोसाइटी बोले या कम्युनिटी बोले, हम मेंटल वेलबींग वीक क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते, जहाँ पे बार बार अलग अलग लोग अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जिससे लोगों को ये बात बहुत ही ज्यादा सामान्य लगने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल है। If we feel that they should promote the accurate and sensitive portrayals of mental health in the media without reinforcing negative stereotypes, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ये बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। तो इसका ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, हम सबको मिलकर के एक्यूरेट नॉलेज बच्चों में ट्रांसमिट करनी चाहिए। एंड फाइनली आई कैन ओनली से that on behalf of the school, the teachers to provide referral services at the right time. And I firmly believe that समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है और समस्या का सामना समस्या के अंत का प्रारंभ है। तो हम सब अगर मिलजुल करके इसके बारे में बात करें, सहजता से बहुत ही सामान्य माहौल बनाए विद्यालय में या घर में, और पेरेंट्स जो नहीं है, नहीं भी समझते हैं, हमें उसको इस लेवल पे लाना पड़ेगा कि आपके बच्चे के साथ अगर कोई ये इशू है तो ये इशू है ही नहीं, ये बहुत ही सामान्य इशू है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज इन इटसेल्फ नॉट अ प्रॉब्लम। सो वी नीड टू मेक फर्स्ट दैट एवरीबडी कंफर्टेबल विद द सिचुएशन एंड वी शुड ऑलवेज से टू द चाइल्ड, यस इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, वी विल टेक यू आउट। जैसा सबने बताया, वी नीड टू एम्ब्रेस एवरी इंडिविजुअल, वी नीड टू डाइवर्ट इंडल्जिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज, और जितनी हम बात करेंगे उतना ही इसके साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा आसानी से दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद चारू मैडम फॉर क्विकली पॉइंटिंग अस कि हाउ इन वेरी इजी वेज, स्वाभाविकता के तौर पे हम लोग किस तरह से इस पूरे इशू को डिस्टिग्मेटाइज कर सकते हैं। डॉक्टर दुग्गल, आई विल कम बैक टू यू अगेन, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, नंबर 1, कि हम स्कूल, घर और कम्युनिटी में किस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर एक हेल्प सीकिंग बिहेवियर को नर्चर कर सकते हैं, कि दैट आई कैन सीक हेल्प फ्रॉम हु ऑल, दैट इट इज़ नथिंग
okay, that it is okay if I can seek help, and to whom all I can seek help, number one. And the other thing that we are talking in this direction is that one important aspect is how do we integrate in the school की जब हम बात करते हैं तो learning definitely is one important aspect of the school's functioning. So in the education, in the learning process, how do we integrate mental health and well-being so that while the students are in the activity of learning, in the process of learning, they also understand and build up this capacity that they can seek help from their different stakeholders. Dr. Duggal. दो तीन चीजें हैं. एक तो जैसे डॉक्टर चारू कह रही थी कि जैसे जागरूकता बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, हेल्प सीकिंग इंप्रूव होगी. देयर इज अ क्लियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू. जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, स्टिग्मा कम होगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और उससे भी हेल्प सीकिंग इंप्रूव होगी. लेकिन हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है, यदि हमारे कम्युनिटी में हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे पीयर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और यदि हम वो डिसीजन लेते हैं हेल्प सीकिंग का और उनका सपोर्ट नहीं होता, देन अगेन इट कैन बी अ बैरियर टू सीकिंग हेल्प. तो इस वजह से पूरी कम्युनिटी में अवेयरनेस होना बहुत क्रूशियल हो जाता है. हैविंग सेड दैट, हेल्प सीकिंग के बैरियर्स को हम रिमूव कर दें यदि अवेयरनेस के साथ, डिस्टिग्मेटाइजेशन के साथ, उसके बाद हेल्प अवेलेबल भी होनी चाहिए बच्चों के लिए. इट नीड्स टू बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल. और स्कूल्स एक ऐसी इकोसिस्टम है जहां पर बच्चे, जैसे डॉक्टर चारू कही थी, बहुत समय हमारे साथ और टीचर्स के साथ रहते हैं. सो हाउ डू वी इन स्कूल स्पेसेस एंड कम्युनिटी स्पेसेस इंश्योर दैट हेल्प इज अवेलेबल? वो हम पीयर सपोर्टर्स ट्रेन कर सकते हैं, लाइक डॉक्टर मीना वाज मेंशनिंग. टीचर्स को फर्स्ट रिस्पॉन्स ट्रेनिंग दे सकते हैं, सो दे कैन बी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. और बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि मेरे एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से लोग हैं हु कैन बी द पीपल आई कैन बी आई कैन रीच आउट टू फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है. दूसरा, वो हमें लिंकेजेस क्रिएट करके दे टू मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स. वो यदि स्कूल में काउंसलर्स नहीं है तो बाहर रेफरल लिंकेजेस तैयार करके दे. और यदि कोई एक्सटर्नल काउंसलर स्कूल से जुड़े हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बच्चों के पास हो. अलॉन्ग विद दैट, हैविंग हेल्पलाइन नंबर्स, चैट प्लेटफॉर्म्स जहां पर बच्चे सीख कर सकें हेल्प, और इसकी जानकारी कॉमन स्पेसेस में स्कूल्स में बच्चों के पास यदि अवेलेबल हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. द चाइल्ड माइट फील मच मोर एनेबल्ड टू सीक हेल्प. कई बार बच्चों की बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर वो अनोनिमसली हेल्प सीक करना चाहते हैं. तो इवन लाइक अ सजेशन बॉक्स वेयर दे कैन ड्रॉप इन अ मैसेज एंड समवन कैन रिस्पॉन्ड टू देयर कंसर्न्स माइट बी वेरी हेल्पफुल. क्विकली टू गो टू योर नेक्स्ट पॉइंट कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट हो सकता है. आई थिंक ऑलरेडी गवर्नमेंट इसमें काफी इनिशिएटिव ले रही है. आयुष्मान भारत के थ्रू जो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, वेलबींग एम्बेसडर्स हमारे टीचर्स हैं, वहां पर ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द थीम्स दैट इज बीइंग इंटीग्रेटेड into the curriculum. लेकिन एक sort of systematic way में यदि well-being, coping, stress management, dealing with academic stress and exam anxiety, ये सारे ऐसे topics बच्चों के साथ हम चर्चा कर सकें, and also talking to them about issues of stress, anxiety, substance use, self-harm, non-suicidal self-injury and suicide. इन सब के बारे में हम डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट तरीके में जो जिस एज में बच्चे हैं उनसे बात कर सके. सो देन इट कुड बी वन वे टू इंटीग्रेट इट इनटू द एजुकेशन सिस्टम. यस मैम, और बहुत ही सही कहा आपने कि बच्चे एनोनिमसली भी हेल्प मांग सकते हैं, चाह सकते हैं. बस ज़रूरत है बच्चों के सामने आने की और हेल्प के लिए बात करने की. यहाँ पर हमारे पास समय बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है हम इस सत्र को या इस डिस्कशन को आगे ले जाएं. लेकिन जाने से पहले सुष्मिता मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंक्लूड द सेशन मैम. The only thing that I would like to say to our dear viewers is that please accept that every child, every life, every student is valuable. And जो भी हमारे बस का है, if there are certain kind of stereotypes, prejudices, biases हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम एक इंसान को, एक स्टूडेंट को, एक छात्र को एक्सेप्ट, उसकी वो जैसे है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो समय है, टाइम अभी है कि हम उन बैरियर्स को तोड़ें और एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर्स अपने बच्चों के साथ शेयर करें. वो वातावरण उनको दे जहाँ पे वो खिले, बढ़े और विकसित हो इन द ट्रू टर्म्स ऑफ एज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, नॉट फीलिंग द utter need कि I have to prove myself, and if I am not able to prove myself then things just cannot work for me.
ये फीलिंग बच्चों में प्लीज़ आने मत दीजिए. And it is also to our very dear students that please accept yourself the way you are. Express without any hesitation if you are not feeling okay, if you are feeling distressed, and if you are feeling in pain about certain things. Identify around you the people who love you without any condition. That can be a parent, that can be a sibling, that can be a friend, that can be a teacher, that can be somebody else in the school system, that can be somebody in the community. कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो आपको समझेंगे, और एक नहीं कई जन होंगे जो आपको सही मायने से समझते हैं और सुनने के लिए तैयार भी होंगे. तो प्लीज़ रीच आउट एंड कीप दोज पीपल विथ यू, सराउंडिंग विथ लव, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू. और सबसे पहली बात, प्लीज़ वैल्यू योरसेल्फ द वे यू आर. थैंक यू. एग्जैक्टली. और बच्चों, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ जैसे भी हैं. सबसे पहले आपको ये करना है. कई तरह के वार्निंग सिग्नल्स ज़रूर हैं. हम सभी को बीइंग एन एडल्ट और गार्जियन, आप सभी को ये जो वार्निंग साइंस हैं ये पकड़ने हैं और उनको सपोर्ट देना है और बच्चों को मेंटल लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है. एंड वी हैव टू रैप अप दिस डिस्कशन हेयर ओनली. और सुष्मिता मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे सभी स्टूडेंट्स को बताया, और साथ ही साथ अपने सभी पैनलिस्ट को, डॉक्टर मीना मैम, डॉक्टर चेतना मैम, डॉक्टर चारू एंड तिवारी सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैम, thank you so very much for being with us and for this insightful discussion. और मैं जाने से पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी एक बहुत ज़रूरी सूचना. NCERT के पाठ्य पुस्तकों से संबंधित शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं. आप ये पुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं, जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं. और ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे पूरे सप्ताह, सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी. और यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in. ये सभी पाठ्य पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी. आप इनकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं. आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर. हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर ज़रूर विजिट करें और सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल लें. इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाज़त. आप बने रहिए eVidya चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. नमस्कार. अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना. अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना. मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी. मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी. चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ. चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ. मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632. नंबर एक बार फिर सुने, 844-844-0632.